Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are well. Before going to start our lecture, I want to ask something. As you know, we have so many chapters in our syllabus, and do you remember how much we have completed? Yes. How many we have completed chapters from our syllabus? 2 chapters. We have completed 2 chapters. Now we are going to start chapter number 3. Chapter number 3, and the name of this chapter is Our Country. I hope today's lecture is very interesting and informative as before. Because why? You know why this chapter is so important and informative and interesting? Just that this chapter is our country. Our country. That's why it's so important. I hope this is very important for us, our country. That's why. Today I will give you in this lecture lot of knowledge, and I will provide you so many more than one videos which will give you the so many information to you. And I hope कि जब मैं लेक्चर दूंगा और इन वीडियोस से आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि आप सबको पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता है, ऑब्वियसली सबको पता है, बट जब आप वो वीडियोस में वो चीज़ देखते हैं तो वो हमारे मेमोराइज होने में बहुत ईजी हो जाती है। वो चीज़ें हमेशा मेमोराइज रहती हैं, और इस एज में अगर आप वो मेमोराइज कर लें तो बहुत ही हमेशा आपके वो काम आएंगी। सबसे पहले अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान इस दुनिया में वर्ल्ड मैप पे है किधर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एग्जैक्टली बहुत सारे कंट्रीज हैं पूरी वर्ल्ड में, बट वेयर इज पाकिस्तान लोकेटेड। आवर कंट्री पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द साउदर्न part of the continent Asia. Our country is located in the southern part of Asia. जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हम जब वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान बहुत छोटा सा मुल्क है। बहुत सारे मुल्क इससे बड़े हैं। इसके नेबर कंट्री में तकरीबन सारे मुल्क पाकिस्तान से ज्योग्राफिकली जो है वो जो उसके लैंड एरिया है वो ज़्यादा है, बड़े हैं, पर बहुत सारे मुल्क दुनिया में पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे भी हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रेच है, तकरीबन 1800 किलोमीटर लॉन्ग है। अगर हम ग्वादर से नॉर्दर्न एरिया गिलगित चित्राल तक जाएं तो मोर देन 2000 किलोमीटर उसकी लेंथ है। पाकिस्तान में ब्लेस है अल्लाह ताला का कि उसमें जो है वो 4 सीजन होते हैं। हर मुल्क में ये ब्लेस नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा कहीं गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर विंटर सीजन होता है, कहीं रेनफॉल होती है, बट इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह के पाकिस्तान में 4 सीजन होते हैं। डेजर्ट भी है, लेक भी हैं, हाईएस्ट माउंटेन भी हैं, रेनफॉल भी होती है, स्टॉर्म भी आते हैं, ओशन भी, सी भी है। तो ईच एंड एवरीथिंग अल्लाह ताला ने हमें इस कंट्री में दिया है। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो जहां पे लोकेशन है पाकिस्तान की, उसके नेबर कंट्रीज कौन से हैं। तो सबसे पहले एक कंट्री चाइना इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। देन इंडिया इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। देन Afghanistan is located in northwest of Pakistan. Then another country, Iran, also our neighbor country. Iran is located in the southwest of Pakistan. And which country is located in the south?
दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। एग्जैक्टली साउथ में कौन सा कंट्री है पाकिस्तान का? यस, गैस करें जल्दी। साउथ, अरेबियन सी। साउथ में क्या है? अरेबियन सी है। ये पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में इंडिया, अफगानिस्तान इज द नॉर्थ वेस्ट, ईरान इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट एंड पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी। ये है पाकिस्तान की लोकेशन। जैसे पहले मैंने बताया साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया के साउथ में है और उसके ये नेबर कंट्रीज हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे पाकिस्तान, वो वीडियो आपको पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताएगी, उसके कैपिटल्स, उसकी लोकेशन और इसके बाद पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उसके कैपिटल और उसके बारे में बताएगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटी सी एक वीडियो है। और चलिए जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि पाकिस्तान का एक प्रोविंस है और एक टेरिटरी है गिलगित बल्तिस्तान, बताएं इसका कैपिटल क्या है? नाउ लुक एट द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो जो आपने देखी इसमें पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज, उनके कैपिटल्स, प्रोविंसेस, इसके बारे में बताया गया है। इसको अच्छी तरह से याद रखें। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें काम आएंगी। ओके, ये बात आप याद रखिएगा। नाउ अब हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, एक ऐसा टूर जो आप तो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट एरिया यानी गिलगित बल्तिस्तान और K2 से लेके पूरे वो पाकिस्तान से होती हुई कराची और अरेबियन सी और ग्वादर तक लेके जाएगी। एक ऐसा टूर जो आपने शायद पहले ना किया हो। बहुत ही लेट्स स्टार्ट आवर टूर। Pakistan, the land of 1,000 opportunities.
Along with its rapidly growing economy and bustling heritage sites, it is home to a number of languages and cultures, as well as being the host to all 4 seasons and possessing a variety of terrains. Blessed with natural and historical riches, Pakistan's breathtaking destinations include magnanimous mountain ranges, rolling lush plateaus, all dotted with an abundance of pine trees and crystal clear waters to the north. Desolate, yet alluring and expansive deserts towards the south. In between both extremes, it hosts countless mausoleums, mosques, gardens and lakes. Pakistan's agricultural sector has boosted the country's economy and continues to achieve high numbers of employment. Acres of fertile land, favorable weather conditions, and abundance of rain and rivers are further enhanced with a strong canal irrigation network. The country's manufacturing sector is thriving, with cotton, textile and apparels being the largest industries. Pakistan is predicted to be the world's fastest growing Muslim economy in 2017. Pakistan is also known for its manufacturing of sports goods, which are used by professional teams and tournaments in various countries, including the FIFA World Cup. The China-Pakistan Economic Corridor is an initiative taken by both neighboring countries to explore investment and bilateral trade. It will link the Gwadar port to the Chinese province of Xinjiang and will act as a game changer not only for Pakistan but for global trade as well. There is constant development in the infrastructure across the country. There are 4 motorways connecting city to city, with 8 more under construction. The Lahore Transport Company, in collaboration with Turkey, also launched the metro bus service in 2013. As a country that is just 70 years of age, we have overcome many obstacles in our way. We have done wonders internationally in all sectors.
The growth of our infrastructure and incentivized investment policy initiatives are leading to a continuous emerging Pakistan. ओके तो कैसी लगी वीडियो? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्ट आया, मजा आया होगा आपको और बहुत एंजॉय किया होगा आपने। आई होप इस वीडियो को देख के आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी इसमें ऐसी जगहें, ऐसी जगहें थी जो आप लोगों ने शायद पहले ना देखी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने नई हो आप लोगों के लिए बिल्कुल। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और इन चीजों को मेमोराइज करें। जब पाकिस्तान की चीजों को मेमोराइज करेंगे तो पाकिस्तान से आपकी जो है ना अफेक्शन जो है ना वो बढ़ेगा और इस अपने मुल्क से जो है ना वो मोहब्बत बढ़ेगी। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और जो अच्छी चीजें लगी उनको आप मुझे लिख भी सकते हैं कि मुझे ये चीज इस वीडियो में से बहुत अच्छी लगी, और आप इसको बार बार देखें और बहुत इंटरेस्ट हो। अच्छा, अब आपने ये वीडियो तो देखी, बहुत आपको एंजॉय किया होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको मजीद जो है वो और एंजॉय किया जाए और पाकिस्तान के बारे में मजीद आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। तो लेट्स गो टू अनदर टूर ऑफ पाकिस्तान। ओके, हाँ, तो आपको कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को आई होप बहुत एंजॉय किया होगा और आप लोग अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करें। जो आप लोग ने अगर पाकिस्तान टूर किया है, घूमा है, जो चीजें जो जगह आपको अच्छी लगी वो भी अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें कि आपने जो मैंने वीडियो दिखाई, हो सकता है आप लोगों ने इसमें से बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखी हुई, तो काइंडली उसको शेयर करें और सबको एंजॉय करें और सब लोगों के साथ शेयर करें कि आपने भी पाकिस्तान घूमा हुआ है।